Traditional theory of capital structure, and this is our third and last module on this topic. This is 207th module of the course of financial management. The traditional theory actually states that with the increase in the leverage, shareholders increase their required rate of return. यानी ये वो बुनियादी बात है जिस पे दोनों थीरीज, दोनों तरह की थीरीज में कोई इख्तलाफ नहीं पाया जाता. जब भी फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ेगा, शेयर होल्डर्स अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाएंगे. जो बुनियादी फ़र्क दोनों थीरीज के अंदर है वो ये है कि ट्रेडिशनल थीरी ये कहती है कि जब फाइनेंशियल लेवरेज बढ़ता है तो शेयर होल्डर्स अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को बढ़ाते हैं, लेकिन इतना नहीं बढ़ाते कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल वही रहे, बल्कि वो इनिशियली अपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न को थोड़ा सा बढ़ाते हैं. Now, increasing the required rate of return a little and not in proportion with the increase in the financial leverage results into the reduction of overall cost of capital. यानी जैसे जैसे शुरू में लेवरेज बढ़ता है वैसे वैसे ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होती जाती है. And then we reach to a point where the overall cost of capital is minimum. अब यहाँ से जब हम मज़ीद अपने बिजनेस के फाइनेंशियल लेवरेज को बढ़ाते हैं यानी और डेट लेते हैं, तो शेयर होल्डर्स ये देखते हैं कि ये तो बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लेवरेज है और हमारे रिटर्न को बहुत ज़्यादा बढ़ जाना चाहिए. इन दैट केस they increase their required rate of return to such an extent that overall cost of capital, instead of decreasing, it starts increasing. We can see that in this graph on the screen that the KO, which is the overall cost of capital, and this is the cost which is used to determine the value of a firm. Initially, this graph is going down until it reaches to the point X. On the x-axis, we have got leverage or gearing, that is another name for leverage, and on the y-axis, we have got the cost of capital. So we can see that as the leverage is increasing, the cost of capital is decreasing, and at the point X, it becomes minimum. This is the point where the value of firm is maximum, and this is the point of optimal capital structure. Now, this initial reduction is because of the increase in the required rate of return less than the overall increase in the financial leverage. And later, the required rate of return is increased with such a proportion that it bypasses, that it overtakes the percentage increase of leverage. And that is the point of minimum value of KO or WACC, and that is the point of maximum value of firm. Now, to conclude our discussion on this traditional theory of capital structure, we can say that traditional theory is a theory of relevance of capital structure. इसका बुनियादी पॉइंट ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर हमारी वैल्यू को अफेक्ट करता है. इसका दूसरा बुनियादी पॉइंट ये है कि कैपिटल स्ट्रक्चर के तब्दील होने से वैल्यू ऑफ फर्म तब्दील होती है और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पर हमारी वैल्यू ऑफ फर्म मैक्सिमम होती है, जिसको हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं. तो हर फर्म को, हर बिजनेस को ये कोशिश करनी चाहिए अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को रिवाइज करके बार बार कि वो उस लेवल पे पहुंचे जहां पर उसकी ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिनिमम हो जाएगी और उसकी फर्म की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी. सो वी कंक्लूड this discussion on the traditional theory of capital structure is that the value of firm can be changed, it can be increased, it can be maximized, and it can be increased to the maximum level, which is called the optimal level. So the capital structure is something which is relevant.
यानी कैपिटल स्ट्रक्चर ऐसी चीज नहीं है कि जिसका असर वैल्यू ऑफ फर्म पे नहीं पड़ता, और हर फर्म, हर बिजनेस अपनी वैल्यू को मैक्सिमम करना चाहता है, इंक्रीज करना चाहता है. सो टू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ फर्म इन addition to other things that the management would do, one thing that they should do is to alter and improve the capital structure.